retinopathy, an important topic on your curriculum, and there might be a class which might have been taken in the past for diabetic retinopathy by Dr. Arif, but we are repeating this because this is a very important topic, and we will go through it second time so that you can write a short note and you can answer the statistician or even the interactive station where it can be kept as a separate activity topic. So diabetic retinopathy is so much important that it can be kept as a separate interactive station which carries 15 marks. तो इसलिए जो है ये आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है करना है. You will be shown pictures of diabetic retinopathy and you have to diagnose the case according to the presentation. Now, what is diabetic retinopathy? Basically, it's a chronic bilateral disease, and it is a symmetrical disease with capillary involvement. It can occur in both types, type 1 diabetes as well as type 2 diabetes. And diabetes can affect not only the eye, but it can also affect the brain, kidney, the legs and the feet. So the prevalence of diabetes is increasing day by day with the changing lifestyle, and in the earlier days people rarely used to have diabetes because they were having physical work more as compared to the mental work. So whenever the physical work is greater than the mental work, then you have your calories burned easily. So they will not lead to any pathology in the body, and there will be a balance of the intake and output. What is the intake? That is, whatever you eat is the intake. And output is the calories that you consume, that you burn. But nowadays, as the sedentary lifestyle nowadays, it's forcing everybody to become diabetic. And if you will do a screening test, you'll see that out of 10 patients, at least 1 or 10%, at least one of them will be diabetic or pre-diabetic. And another misconcept about the diabetes is that we go for the random blood sugar or the fasting blood sugar and we diagnose the patient according to it. But this has been seen that random blood sugar or fasting blood sugar, it varies according to the diet of the patient. If the patient is fasting, he has not taken meal, his blood sugar might be normal, and you might misdiagnose that the patient is not diabetic. So that's why nowadays HbA1c is the best test that diagnoses the diabetes, and it has the cover-up of 3 months blood sugar level. So normally it should be less than 6, and if a patient has HbA1c less than 6, then you can easily say that and very definitively say that the patient is not diabetic. Now, type 1 diabetes and type 2 diabetes, this you might have learned in the pathology. Type 1, that is before 30-year age, and type 2 after that. Type 1 is insulin dependent and type 2 is non-insulin dependent due to the resistance of the insulin. The patient might have non-insulin dependent diabetes. Now, diabetic retinopathy is common among both types, type 1 diabetes as well as the type 2 diabetes. Now, prevalence of diabetic retinopathy among diabetic patients, it depends not only upon the level of the blood sugar, but also upon the chronicity. Okay? If a person is having blood sugar level
random blood sugar level more than 180 for a longer period of time, he will develop diabetic retinopathy. Okay? Similarly, if a person is having random blood sugar level less than 180 and he is known diabetic, it is well controlled, but still he has been diabetic for 10 years, then he can also develop diabetic retinopathy. It means that not only the blood glucose level, but also the duration and the chronicity also affects the disease. So if the disease becomes old enough, diabetic retinopathy can even ensue without a high blood sugar. ठीक है, बहुत अरसे तक अगर आप देख लें तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, चाहे उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में ही क्यों ना हो. Now, how can a patient with a normal sugar level can have diabetic retinopathy with that much duration of time? तो इसका आंसर ये दिया गया है that you don't have a 24-hour basal level of blood sugar at your hand. You don't have it. Nowadays they are inventing such monitoring devices which regularize the 24-hour blood sugar level. There are skin patches, they are which are a machine which is attached to the skin, and it will give a 24-hour record of the blood sugar level. ठीक है, तो वो इस किस्म के आ गए कि उनको 24 घंटे का पता चल जाता है कि 12 बजे कितना था, 2 बजे कितना था, 6 बजे कितना था. So you don't have to rely on to just 1 or 2 readings per day. It will give you the whole day readings. तो उसके लिए ये ज़्यादातर किया जा रहा है. ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि if a person is having diabetic retinopathy, remember that he will most probably also be having diabetic nephropathy. तो रेटिनोपैथी होती है तो उसके साथ नेफ्रोपैथी जरूर होती है. अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वी विल सेंड हिम टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट टू स्क्रीन आउट द किडनी फंक्शन. ठीक है जी. कौन सी? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ना, ये पहले इस पर बहुत ज्यादा रिलाय किया जाता था. ठीक है, एंड दैट इज फॉर दोज पर्सन हु आर प्री डायबिटिक स्पेशली. मतलब उसमें अभी डायग्नोस आपने नहीं किया है एंड दे आर हैविंग बॉर्डरलाइन ब्लड शुगर लेवल व्हेनेवर यू चेक इट. सो यू कैन गिव द जीटीटी टेस्ट. तो उसमें ये होता है कि अगर वो डायबिटिक होगा तो द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल नॉट फॉल आफ्टर गिविंग ओरल ग्लूकोज immediately, as in normal persons, that as soon as you take glucose, insulin level is increased in the body and it's going to catabolize the glucose. ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है. लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है जी. These are the associated factors that can increase the diabetic retinopathy, like the hypertension, obesity, smoking, pregnancy, and the family history and age. These will aggravate the diabetic retinopathy, and if they are associated along with diabetes, the patient is more prone to have the retinopathic changes. We don't have to go into the details of the signs and symptoms of the diabetes, because that will be covered in your medicine subject. Whenever a person with diabetes comes to us, what we have to do? Or you can say that there are many diabetic screening programs in the community in which the community ophthalmologists go into the community and carry out some screening tests in a camp. There are camps for diabetic screening also.
So what they are going to do over there, they are going to check the visual acuity, they are going to check the intraocular pressure, they are going to check the anterior segment examination with the slit lamp, then a very nice endoscopy should be carried out. Okay? So that can be done with the direct ophthalmoscope, indirect ophthalmoscope, or slit lamp biomicroscopy. Pupillary assessment should also be done. जी अभी जो बात कर रहे थे ये तीनों चीजें इसमें मेंशन है, HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द GTP. अब ये HbA1c 7%, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी. आप हमारे यहाँ अगर लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स देखेंगे, you will see that up to 6 is a good diabetic control and the patient is not diabetic. But more than that, they are pre-diabetic or diabetic. तो वो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था इस तरीके से. तो ये हर कम्युनिटी का डिफरेंट होता है. ये एक इन्होंने यूके की स्टडी है उसका बताया है कि वहाँ पे 7% जो है अगर उतना है फिर आप उसको डायबिटिक है. ठीक है. जी a few years back, the classification of diabetic retinopathy was different. It was said that there is a background diabetic retinopathy, and then there is a non-proliferative, and then the proliferative diabetic retinopathy. But nowadays, the classification has been changed, and it is being said that, broadly speaking, there is just non-proliferative and proliferative diabetic retinopathy. Among the non-proliferative diabetic retinopathy, there is mild, moderate, and severe. In proliferative diabetic retinopathy, it's just proliferative, no mild, moderate, or severe. Okay? Then there is diabetic macular edema. In non-proliferative diabetic retinopathy, the hallmark are the microaneurysms. Now these microaneurysms, they will grossly be visible, very similar to the dot hemorrhages. ठीक है, जिस तरह के छोटे-छोटे dot hemorrhages होते हैं, बिल्कुल उसी किस्म की पिक्चर होती है जो कि microaneurysms की होती है. You know that what is a microaneurysm? It's an abnormal localized dilatation of a blood vessel. And we know that diabetic retinopathy is basically a microvascular disease, okay? In which there are vascular changes, there are endothelial changes which lead to plugging of the blood vessels and then localized ischemia. So over here in this picture, one is a fundus picture, the other is rat-free picture, okay? Where you can see that the fluorescein has been given to the patient and it is flowing through all the blood vessels of the retina. Now this is a fundus photograph where it is barely visible that there are microaneurysms. ये छोटे-छोटे dots जो नजर आ रहे हैं, these are microaneurysms. They are very similar to the dot hemorrhages. But when the same patient, FFA was carried out in it, where fluorescein is given IV intravenous, and then you have to take the picture. ठीक है? जिस तरह से आपने हो सकता है पैथोलॉजी में पढ़ा हो कि एक होता है बैरियम मील एंड फॉलो थ्रू. उसमें क्या कहते हैं, बैरियम देते हैं और उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं, एक्सरेज लेते हैं. ये भी सिमिलरली इस तरीके से है. इसमें जो है फ्लूरोसेंट दी जाती है, बट इट्स नॉट ओरल, इट्स आईवी, एंड विद इन सेकेंड्स
that fluorescence reaches the retinal blood vasculature. तो जैसे ही आप उसको आईवी लगाते हैं वहाँ उसको आपको पिक्चर लेनी होती है विदिन सेकंड्स, वरना वो सर्कुलेशन में से गुजर के चली जाएगी और किडनी से निकल जाएगी। तो इसलिए बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, फौरन तस्वीर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो व्हाइट कलर के आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, बेसिकली दिस इज फ्लूरेसेंट इन दीज ब्लड वेसल्स। ये व्हाइट कलर का जो है ये फ्लूरेसेंट है, डाई है, जिसने इसको ये स्टेन किया है। अब इसमें से ये आप देखें, यू कैन सी दैट देयर आर वेरी स्मॉल व्हाइट कलर डॉट्स, ठीक है। तो इट डिफरेंशिएट्स द डॉट हेमरेजेस फ्रॉम दी माइक्रो एन्यूरिज्म। अगर वहां आपको ये लग रहा था कि ये डॉट हेमरेज है, तो ये एफएफए इसको क्लियर आउट कर देगी कि ये डॉट हेमरेज है या माइक्रो एन्यूरिज्म। किस तरीके के साथ, how you are going to know that either it's a microaneurysm or a dot hemorrhage? You know that microaneurysm is a localized dilatation, so the fluorescence will accumulate there. When fluorescence will accumulate there, it is whitish in color, so it will give a whitish color dot appearance over there. अब ये सारे देखें आप, ये dot appearance, ठीक है। So these are all microaneurysm. On the other end, if there is dot hemorrhage, what is going to happen? That a hemorrhage blocks the fluorescent stain visible to you. So it will not be white in color, it will be black in color. तो वो आपको black color के dots नजर आएंगे अगर hemorrhage होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये white color के नजर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको black color की, क्योंकि उसने हेमरेज ने वो फ्लोरेसेंट को ब्लॉक कर दिया पीछे से। तो डॉट हेमरेजेस की बात होगी इसमें, ठीक है। जी, along with the microaneurysm, there are dot hemorrhages, broad hemorrhages in diabetic retinopathy, and very rarely flame-shaped hemorrhage. Flame-shaped hemorrhage is a pathognomic of hypertensive retinopathy. ये याद रखें, डॉट क्लॉट इज पैथोजेनोमिक ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये आपको पता होना चाहिए। देन द पेशेंट विल बी हैविंग हार्ड एक्सुडेट्स, इसके बारे में भी बताया गया होगा। दीज आर बेसिकली लोकलाइज्ड लिपिड accumulation that comes out from the blood, and then there are cotton wool spots. Now cotton wool spots, they are more common in ischemic case and diseases, and it's more common in hypertensive retinopathy as compared to the diabetic retinopathy, ठीक है। diabetic retinopathy में hard exudate आपको ज़्यादा मिलेंगे, hypertensive retinopathy में soft exudate आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। Now over here there are hemorrhages which have been shown. Along with that you can see hard exudates. अब ये दो सर्कल्स हैं, इसमें आप देखें कि यहाँ पे डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस हैं। द डिफरेंस इन डॉट एंड ब्लॉट इज दैट डॉट हेमरेज इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड ब्लॉट इज अ लिटिल बिट लार्जर, बिगर इन साइज, ठीक है। डॉट एंड ब्लॉट। इसके बाद आप आ जाए, ये जो येलोइश कलर का आपको यहाँ पे लीजन नजर आ रहा है, ये वाला, this is hard exudate, very good, this is hard exudate. Hard exudate की typical picture क्या होगी? It will be yellow in color, ठीक है। The margins will be discrete, ठीक है, and it can occur anywhere in the retina, ठीक है। So this is hard exudate. You can see the margins, the color, आप इससे पहचान सकते हैं कि ये hard exudate. Similarly over here also you can see there are hemorrhages. There is a big hemorrhage over here. यही हार्ड एक्सुडेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाए गए। यहाँ पे हेमरेजेस कम है, लेकिन हार्ड एक्सुडेट्स बहुत ज्यादा। Remember these pictures because these are going to come in your static station, even in interactive station. ये तस्वीरें याद रखें, कोई बाहर से नहीं आएंगी, यही तस्वीरें आएंगी, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा
एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं ये हार्ड एक्सुडेट है या सॉफ्ट एक्सुडेट है, ठीक है। इसी तरह वो पूछेगा ये डॉट डॉट हेमरेज है या फ्लेम शेप हेमरेज, यू शुड रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। यहाँ पे हम आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। Now, in some cases, you can see cotton wool spots, या जिसे soft exudate भी कहते हैं, in diabetic retinopathy, where ischemia is supervening the dilatation. So, what you are going to see, these soft exudates, please recognize them. They are whitish in color, they are cotton-like, and the margins are not discrete, they are diffuse. इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी margins clear cut नहीं है, डिफ्यूज है। दूसरा, इसका कलर येलो नहीं है, दिस इज व्हाइटिश इन कलर। These are soft exudates, more common in hypertensive retinopathy as compared to the diabetic retinopathy. ठीक है जी। Then in severe non-proliferative diabetic retinopathy, along with the dot hemorrhages, along with the hard exudates, sometimes soft exudates, you might also see intraretinal microvascular abnormalities, and then you can see venous bleeding, loops and segmentation. ठीक है। अब यहाँ पे ये venous looping नजर आ रही है, ये लूप बन गया है। This is a sign of severe non-proliferative diabetic retinopathy. ठीक है। इसके बाद आ जाए, इसके आगे स्लाइड्स में बात करेंगे, अभी वो आगे है, इसलिए मैंने इसको जी। उसके बाद आ जाए proliferative diabetic retinopathy. This is the next stage of diabetic retinopathy in which what happens that there are neovascularization on the optic disc and neovascularization elsewhere. If the neovascularization occurs onto the optic disc, it is NVD, and if the neovascularization it occurs other than the optic disc, it is elsewhere. जिसे NVE कहते हैं, ठीक है। G. Now in this picture, this is optic disc. You can see that there are very small abnormal blood vessels onto the optic disc. So this is NVD. ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। This is NVE. Neovascularization, small abnormal blood vessels, not onto the optic disc but other than there, elsewhere. Now the characteristic of neovascles is that they are very much leaky, ठीक है, and their skeleton is very weak. They can lead to hemorrhages, and those hemorrhages can secondarily fibrose and lead to fractional retinal damage, ठीक है। Now there is a pre-retinal hemorrhage, and then there is vitreous hemorrhage, which is seen in proliferative diabetic retinopathy. When you are encountering a diabetic retinopathy case, what you are going to see that there are retinal hemorrhages, dot hemorrhages, blot hemorrhages, sometimes flame-shaped hemorrhages. But other than that, you can also see a pre-retinal hemorrhage and a vitreous hemorrhage. ये क्या होते हैं? ये रेटिना के अंदर नहीं होते। डॉट प्लॉट हेमरेजेस, दे आर इंट्रारेटिनल, मींस दे आर इनसाइड द रेटिना, while the pre-retinal hemorrhage, it's not inside the retina, it's proximal to it, मतलब रेटिना से थोड़ा सा पहले होता है, लेकिन विट्रस के अंदर नहीं होता। तो ये pre-retinal hemorrhage जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि it takes the shape of a boat,
ये कश्ती होती है ना, वैसा शक्ल हो जाती है इसकी। तो इस किस्म का हेमरेज जब भी आप रेटिना में देखें, इट्स अ प्री रेटिनल हेमरेज। ठीक है, ये अगर आपके एग्जाम में स्टेशन में आ जाए स्टैटिक में, तो आप इसको कहेंगे प्री रेटिनल हेमरेज। ये बोट शेप है। इट्स इन बिटवीन द विट्रस एंड द रेटिना। लेकिन अगर हेमरेज विट्रस के अंदर हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं विट्रस हेमरेज। इट कैन टेक एनी शेप. It will be spreading into the whole vitreous. It will float down due to gravity, but you can see it floating anywhere in the vitreous, and it moves with the eyeball. जब पेशेंट अपनी आंख इधर उधर मूव करेगा तो ये ब्लड भी इधर उधर मूव होगा। लेकिन जो प्री रेटिनल हेमरेज है वो फिक्स है, जो रेटिनल हेमरेज है इंट्रा रेटिनल वो भी फिक्स है। तो proliferative diabetic retinopathy में you know that there are abnormal neovessels. They can bleed inside the vitreous, they can bleed in between vitreous and retina, and they can bleed inside the retina. तीनों जगहों पे ब्लीडिंग हो सकती है। अब क्या होता है, ये जो ब्लीडिंग अगर ज्यादा अरसे तक रहे तो फिर इसमें फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, this is a bodily physiologic mechanism that so a fibrin membrane will be formed और इस fibrin membrane का नाम है fibrovascular membrane. Fibrovascular membrane. It's a fibrovascular because it's an admixture of fibrin and blood vessel. So fibrovascular membrane will be formed, and after a longer period of time, this fibrovascular membrane it will have a tractional effect onto the retina. ये जो है ना अपनी तरफ रेटिना को खींचेगा। ठीक है, तो ये विट्रस में से बनेगा और ये रेटिना को अपनी तरफ खींचेगा। What is going to happen? That due to this traction, retinal detachment can occur. The neurosensory retina will become separated from the pigmented retina. ठीक है, so this is a type of retinal detachment. आपको आरडी पढ़ाया गया होगा यकीनन, उसमें एक होता है जी बताइए रेगमेटोजीनस, और दूसरा नॉन रेगमेटोजीनस। ठीक है, और जिसे एक्सुडेटिव भी कहते हैं, और तीसरा कौन सा होता है ट्रैक्शनल। ये ट्रैक्शनल वाला ये है। रेगमेटोजीनस में क्या होता है, टियर होता है, सुराख हो जाता है। नॉन रेगमेटोजीनस में सुराख नहीं होता, पानी भर जाता है रेटिना की लेयर्स में और वो रेटिना अलग हो जाता है। और ये जो तीसरा वाला है ये खिंचाव की वजह से होता है, दिस इज फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये इट अकर्स इन एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, एंड व्हेन दिस स्टेज अकर्स वी विल से दैट द इन ओल्डर डेज वी यूज्ड टू से दैट इट इज अ फाइब्रोटिक स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, and this will lead to blindness. Fibrotic stage of diabetic retinopathy, क्योंकि इसमें आगे चल के क्या होता है कि ब्लड वेसल तो खत्म हो जाती है लेकिन सिर्फ फाइब्रोटिक एलिमेंट रह जाता है. So this will be the end stage, and the patient then will become blind. No treatment is going to affect. Okay? Please recognize this place where it is in the retina. कहाँ पे है ये? This is optic disc. यहाँ से नजर आ रही है? ये कोने में छोटी सी पार्शल आपको optic disc नजर आ रहा है. If you will go a little bit temporal to it, you will see fovea. यहाँ पे fovea का आपको reflex नजर आएगा. और यहाँ के ये पूरा zone जो है, this is macula. Macula is a big zone. It is 3 disc diameter. ये याद रखें, 3 disc diameter. Disc diameter से मतलब क्या है? जितनी उसकी optic disc होगी उसके 3 गुना हो गई.
So macula is this much over here, and the size of fovea is nearly equal to optic disc. And fovea has a central zone which is called foveola. ठीक है? Now over here you can see that in macula there are yellowish colored lesions which are discrete, and these are what? Hard exudate. Hard exudates. Very good. So these are hard exudates. If the hard exudates, they accumulate along with the hemorrhages and swelling in the macula, this condition is termed as clinically significant macular edema. ठीक है? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CSMO. ये पिक्चर आपके एग्जाम में आ चुकी है. Clinically significant macular edema. इसकी peculiarity क्या है? You will see hard exudates, you will see swelling, you will see hemorrhages. ये तीन चीजों में से कुछ भी हो अगर मैक्युला के अंदर, तो इसको हम कहते हैं CSM. ठीक है? जी, ये उसी चीज को अभी जो मैंने आपको बताया CSMO, ये चीज है ना. अब इसमें आपके लेवल के जो चीज जरूरी है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो दे आर गोइंग टू आस्क वेरी टिपिकल अबाउट द एक्यूरेट definition of clinically significant macular edema. And what is the accurate definition? It should be having either one of these three criteria. Number one disc area thickening within 1 disc diameter of center of fovea. ये पहली तस्वीर देखें. Over here, you know, there is fovea, and then within the 1 disc diameter of the center of the fovea, there is swelling. ये swelling नजर आ रही है आपको, and this swelling is also 1 disc diameter. ठीक है? ये swelling of the retina within 1 disc diameter of the fovea is clinically significant macular edema. Similarly, अब यहाँ पे आ जाए. Hard exudate within 500 micrometer of center of fovea along with thickening. This is the center of the fovea. अगर इसके 500 माइक्रोन्स के अंदर ये hard exudate हैं, तो this is also fulfilling the criteria of clinically significant macular edema. Similarly, there is retinal thickening within 500 micrometer of center of the fovea. That the thickening is within 500 micrometer of the center of the fovea. Okay? So again, this will also be fulfilling the definition of clinically significant macular edema. इनमें से कोई भी चीज है तो वो आप उसको CSMO के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में एक्यूरेटली ये चीजें बताना जरूरी नहीं है. बट यू शुड नो that the presence of hard exudates, the presence of thickening, and the presence of hemorrhage, they decide that the patient is having diabetic macular edema or not. ठीक है? तो आपके लेवल पे वो काफी है. आपने अगर ये बता दिया तो this will be too much, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा. ठीक है? तो उतना याद रख लें, वो काफी है. इसमें अब हम जो है जी, ये पिक्चर एग्जाम में हर दफा आती है. दिस इज आइरिस, दिस इज प्यूपिल. ओवर द आइरिस यू कैन सी ब्लड वेसल्स. सो दिस इज कॉल्ड
रूबियोसिस आयराइटिस, ये आपके एग्जाम में हर साल एक चीज ये आती है, इसको याद रखना। रूबियोसिस आयराइटिस, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत अरसे तक रहे, प्रोलिफरेटिव स्टेज में चली जाए, तो फिर अच्छा न्यूवेस्कुलाइजेशन होती क्यों है रेटिना में? व्हाई डज द डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस फ्रॉम नॉन प्रोलिफरेटिव टू प्रोलिफरेटिव? बिकॉज ऑफ द release of vascular endothelial growth factors, vascular endothelial growth factors, and those factors might also migrate up to the iris. यहाँ तक भी आ सकते हैं। जब यहाँ तक आ जाएंगे तो यहाँ भी न्यू वेसल्स बन जाएंगे और इनको हम रूबियोसिस कहते हैं, ठीक है। Now, what you are going to do for these cases, you have to first of all diagnose the stage, and then you have to treat the case, ठीक है। मैनेजमेंट आ जाती है इसमें आप, तो जो इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट में हमसे वो कर लेते हैं। In management, you have to first of all work up for the diabetes कि ये कौन सी टाइप की डायबिटीज है, और you have to control the sugar level of the patient, ठीक है। जी, ये एक चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, जो कि वो उसमें आपको वो बता रहे हैं कि what should you do। अगर किसी को नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है, एक पेशेंट है, वो आपके पास आया और आपने उसको एग्जामिन किया, यू डायग्नोज एज डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड इट्स अ नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, so don't panic the patient, tell him that it's okay, and if you will control your blood sugar level, it will remain as such. So you have to just observe annually, ठीक है, and take the pictures, उसकी pictures ले लेंगे आप, ठीक है, फंडस फोटोग्राफिक पिक्चर लेंगे और आप उसकी FFA भी करवा लेंगे, ठीक है, और OCT भी करवा लेंगे। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो उसकी हर साल होनी है, and then you will have to follow him annually। तो जैसे ही कोई नई चेंज आएगी तो it's going to be picked up by you by seeing the older report। Nowadays in Aga Khan, Karachi, they have produced a software in which they annually do these tests, and that computer automatically catches up any new change in the patient's retina। तो कोई उसमें हल्की सी भी चेंज आती है तो वो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि भाई इस दफा जो है इसमें ये सॉफ्ट एक्सुडेट ज्यादा आ गए, इस दफा जो है इसमें हार्ड एक्सुडेट बनना शुरू हो गया, इस दफा इसमें न्यू वेसल बनना शुरू हो गई। सो दैट विल बी पिक्ड अप बाय अ सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन मेड ओवर देयर, वो उन्होंने मंगवाया है, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्नोस सीरियल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, ठीक है। ये पिक्चर आपके एग्जाम में आई थी और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एक्सेप्ट वन और टू स्टूडेंट द होल बैच वाज अनेबल टू आंसर इट, ठीक है। मैंने बोला यू आर ट्रीटिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी, सारा आपने उसका कंट्रोल कर लिया शुगर, ठीक है, आपने देखा कि वो अभी नॉन प्रोलिफरेटिव में है, ओके, बट एज सून एज यू सी दैट द पेशेंट is now converting into severe non-proliferative diabetic retinopathy, now you have to intervene, moderate to severe। mild में कुछ नहीं करना है, लेकिन moderate to severe में जैसे ही आना शुरू होगा फिर आपने कुछ ना कुछ करना है। and what is that, you have options। one option is that go for laser। in laser what you do,
there is laser photocoagulation. The principle is that you burn most of the retina and save the macula. ये प्रिंसिपल याद रखना, ठीक है? You burn most of the retina and save the macula. इसका क्या फायदा है? When you burn most of the retina, the blood that was going into the elsewhere retina, it will be saved. Now it will go into macula. ज्यादा जरूरत किसको है बचाने की? मैक्युला को बचाना है, because it is the central vision. You have to save the macula. ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि जो दूसरा पेरिफेरल रेटिना है उसको आप जला दें, तो उसकी फाइब्रोस हो जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी. अब वही ब्लड जो पहले वहां पे जा रहा था, अब वहां जाने के बजाय कहाँ जाएगा? It will nourish the macula. So the ischemia will be very less over there and the macula will survive for a longer period of time. So laser photocoagulation of this type in which you burn the retina is called PRP, pen retinal photocoagulation. ठीक है? Pen retinal photocoagulation where you spare the macula and burn the other retina. अब यहाँ पे यही चीज है इस पिक्चर में. यहाँ पे ये जो बर्न्स हैं ये कुछ अरसे के बाद पिगमेंटेड हो जाते हैं, उसके निशान आपको फिर ऐसे नजर आएंगे. तो दीज आर पिगमेंटरी बेसिकली साइंस ऑफ बर्न्स इन द पास्ट. आपने इसको लेजर बर्न किया और उसके निशानात ये ऐसे रहते हैं. अब इसमें आप देखें ये ऑप्टिक डिस्क है, इसका मैक्युला कहाँ पे होगा? यहाँ पे. इसको छोड़ दिया गया है, यहाँ पे कहीं आपको ऐसा पिगमेंटेड मार्क्स नजर नहीं आएगा लेजर का, जबकि यहाँ सारे देखें आप, ये सारा लेजर मार्क्स है. तो इन्होंने क्या किया है? ये पूरा रेटिना इसकी कुर्बानी देके और ब्लड यहाँ पे बचा दिया है इसके लिए, इस पोर्शन के. तो दिस इज PRP. ठीक है? ये एग्जामिनर जरूर पूछता है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में. दूसरा होता है ग्रिड लेजर. ये था PRP. दूसरा ग्रिड लेजर में क्या होता है? दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन फॉर डायबिटिक मैक्युलोपैथी. अभी हमने क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडिमा की बात की, उसमें जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें लेजर वहां सारा करने के बजाय या मार्जिन पे ग्रिड पैटर्न में किया जाता है इन ऑर्डर टू सेव द मैक्युला. उसमें जलाया नहीं जाता मैक्युला को, बल्कि उसकी पेरिफेरी में ऐसे थिकनिंग जो होती है उसको खत्म किया जाता है. So that is the grid laser for clinically significant macular edema. So your answer to the examiner should be that if the patient have moderate to severe diabetic retinopathy, which is non-proliferative or it may be proliferative, then you can go for PRP. PRP. If the patient is having clinically significant macular edema, you have to go for grid laser or focal laser. ठीक है? If the patient is having clinically significant macular edema, you can have another option which is called anti-VEGF injection. ये एग्जामिनर जरूर पूछेगा आपसे, anti-VEGF injection. VEGF अभी आपने बताया, उसकी वजह से सारा मसला हो रहा है. आप उसका एंटागोनिस्ट लगा दें पेशेंट को. इट इज गिवन इंट्राविट्रली. ठीक है? इट इज गिवन इंट्राविट्रली एंड विवासिजुमैब एंड रेनिसिजुमैब, एफिब्रिसिल, दीज आर द एग्जांपल्स. ये इन दवाइयों के नाम हैं जो कि हम इंट्राविट्रल इंजेक्ट करते हैं एंड दे आर एंटी-VEGF. सो दे विल स्टॉप द neovascularization and they will hasten the proliferative activity in the retina. तो वो रेटिना बच सकता है. तो anti-VEGF a very good option for treating diabetic retinopathy. ये एग्जाम में जरूर पूछेगा. ठीक है? ये चीजें आपने याद रखनी है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, तो इंशाल्लाह आपका जो है इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे.